Hello everyone, this is 7th video of first chapter. In this video, we'll discuss income and expenditure account. Not-for-profit organizations do not prepare profits and loss account as they are not set up with the purpose to earn profit. Instead, they prepare income and expenditure account at the end of the accounting period to determine surplus or deficit. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता क्योंकि इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जिसमें से हमें सरप्लस और डेफिसिट का पता चलता है। इनकम्स एंड गेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। इनकम्स और गेन्स जो होते हैं उसे क्रेडिट साइड पे यानी कि इनकम साइड पे ट्रांसफ़र किया जाता है, वाइल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड। डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज ईदर सरप्लस और डेफिसिट। Surplus is added to the capital fund, whereas deficit is deducted from capital fund in the balance sheet. Income and expenditure account is prepared at the end of accounting period, matching revenue receipts with revenue expenses to determine surplus or deficit. It is prepared following the accrual basis of accounting. तो इसमें accrual basis follow किया जाता है. Revenue expenses for the accounting period are taken whether paid or not, चाहे हमने पे किए हैं या नहीं पे किए हैं, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग भी है तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा टू फाइंड आउट एक्यूरेट सरप्लस और डेफिसिट. सिमिलरली रेवेन्यू इनकम्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर रिसीव्ड और नॉट. नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज depreciation आर अकाउंटिंग. कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक परचेज ऑफ लैंड आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज दे आर शोन इन द बैलेंस शीट. तो कोई भी कैपिटल आइटम्स होंगी उन्हें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा. Capital incomes or receipts like donation for specific purposes are not considered. So this is the format of income and expenditure account. You can see we have to make adjustments also, like we were making in profit and loss account in +1. So let's start a question number 44. From the following receipt and payment account of Jaipur Sports Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. Receipt and payment account is given. This is receipt side, this is payment side. कुछ आइटम्स को छोड़ के रिसीप्ट साइड की जो सारी आइटम्स हैं उसे या तो इनकम साइड पे पोस्ट किया जाएगा या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे पोस्ट किया जाएगा. सिमिलरली जो पेमेंट साइड की आइटम्स हैं उसे एक्सपेंडिचर साइड पे पोस्ट किया जाएगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या एसेट साइड पे पोस्ट किया जाएगा. सिर्फ कुछ ही ऐसी आइटम्स हैं जिसमें ये जो केस है वो एप्लीकेबल नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 44. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश और बैंक. इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा ऑन द एसेट साइड, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस. This is the entrance fees of 2019-20, means related to previous year. This 50,000 is related to current year. So by entrance fees on the income side 50,000 will be recorded. Next is subscriptions. Subscription for 2019-20, 2021 and 21-22 is given separately. So we'll record the subscription of 2021 rupees 90,000. You can see in the bracket it is mentioned that this subscription is 90% of total subscription. So we have to calculate the outstanding subscription. For that, we'll multiply 90,000 with 100 by 90. So full subscription will be 1 lakh. 90,000 received. 10,000 is outstanding for current year, which will be added to 90,000, and total subscription for the current year will be 1 lakh rupees. Next is life membership fees. Life membership fees is a liability, so it will not be recorded in income and expenditure. It will be shown on the liability side of balance sheet. Next is donations. By donations 1,20,000 rupees. नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर टूर्नामेंट. कोई भी डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड. सिमिलरली टू सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर्स पार्टी इज ऑल्सो फॉर स्पेसिफिक पर्पस. इट विल ऑल्सो बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट.
नॉर्मल डोनेशन और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. बोथ दीज थिंग्स आर स्पेसिफिक. Next is interest on 8% fixed deposit, 2,400. Whenever any interest is mentioned, you have to check whether there is investment is given or not. So this is the 8% fixed deposit, rupees 1,20,000 made on 1st October 2020. तो हमें इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा कि फुल इंटरेस्ट आया है या नहीं आया है. 8% of 1,20,000 is 9,600 and for half year it will be 4,800. Received amount is 2,400. It means 2,400 is still outstanding. So buy interest on 8% FD 2,400 plus outstanding interest on FD 2,400. Total interest will be recorded, that will be 4,800. Sale of old newspaper. Buy sale of old newspaper 300. Sale of old sports material. Book value is given. It means sports material is an asset, is considered as an asset. तो 1200 रुपये बुक वैल्यू है, सोल्ड एट 500. इसकी सेल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है सेल पे, दैट विल बी रिकॉर्डेड. सो यू कैन सी book value was 1,200 and sale value is 500. So there is a loss of sale of old sports material, that will be 700 recorded on the expenditure side. Next is lockers rent 6,800 including 600 for 1920. This 600 is related to previous year, so it will be deducted. Buy lockers rent minus outstanding for 1920, the balance will be 6,200. Now payment side, rent total 60,000 including 15,000 for previous year. To rent 60,000 minus 15,000, balance 45,000. Insurance premium 60,000 including 15,000 for 21-22, means next year. So insurance premium 60,000 minus advance for 21-22 15,000, balance 45,000. Sports equipment are assets, will be recorded in the balance sheet. Furniture also an asset. Fixed deposit also an asset. Tournament expenses, you can see specific donation for tournament is given, it will be shown in the liability side, and these expenses will be deducted out of this donation. So it will not be recorded in income and expenditure. Books are asset. Newspaper, 2 newspaper 1,000. Printing and stationery, 2 printing and stationery 19,000. This is the closing balance of cash, it will be recorded in the closing balance sheet. So now it is time to find out the result. Total of right side will be 2,81,300 और लेफ्ट साइड माइनस करने के बाद द सरप्लस विल बी 1,70,600. This is your answer and this is question number 44. Thank you.